Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. Today we are here for the discussion of solutions of Matrix Olympiad paper phase 1 which was held on 5th of October 2025. We will start from class 10th and the subject is physics. So let us start our discussion. Question number 1. In question number 1 it is said an observer standing still in front of a plane mirror notices a mosquito flying at 1 meter per second toward the mirror. At the same time, the observer starts walking toward the mirror at 2 meter per second. With respect to the observer, what is the apparent velocity of mosquito's image as seen in the mirror? So, we have to find the apparent velocity of the image. So, as we know that if this is our plane mirror and if object lies this side and image is formed on other side, if object moves toward mirror with velocity VO, then as we know that the image will move in this side and let's say the velocity of image is VI. As we know that VO is equals to minus VI. So as the mosquito is moving with a speed of 1 meter per second, so due to this the image will also move with a speed or velocity of 1 meter per second. Okay, because the man is also moving toward the mirror with a velocity of 2 meter per second, so the image will also move in same direction with a velocity of 2 meter per second. So in this case we can say the velocity of the mosquito's image as seen in the mirror will be 3 meter per second, which is towards the mirror. So our correct answer is option B, 3 meter per second towards the observer. Next question. In next question it is said ABCD is a square loop made of a uniform conducting wire. The current enters the loop at A and leaves at B. The magnetic field is. So here we have 4 options, we have to choose the correct one. So as we see here, the current enters from point A. Okay, now at point A it is divided. Some of the current passes through AD section and the similar current will pass through DC section and then CB section, because all these 3 sections are in series, and some of the part of the current will pass through AB. As we can see here, the length of ADCB part is thrice of the length of AB. So the resistance of this part will be 3 times compared to AB part. Okay, so we can say resistance of RADCB will be 3 times of resistance of part AB. Okay, because resistance is directly proportional to the length of wire. So if I current is passing through this branch, so current will be divided according to the resistance of the wires. Okay, so as we know that in this section resistance is more, 3 times more, so the current flown through ADCB part will be, let's say IADCB will be 4th part of total current, while the current flowing through AB part will be 3/4 of total current. Okay, so as we know that there are 4 straight sections of this wire, and due to straight wire, current carrying wire, the magnetic field is given by formula mu naught I upon 2 pi r, where r is the distance from wire. Okay, so let us check. So there are 4 options. Let us read the 4 options first. 0 only at the center of loop, maximum at the center of loop, 0 at all points outside the loop, 0 at all points inside the loop. As we know that the magnetic field varies as the distance varies. So we know that C and D is incorrect. So we have to check at the center the magnetic field is maximum or minimum. So let us count the magnetic field due to all these 3-4 sections. Okay, so as we know that in AD, DC and CB part, the value of current is same, the distance is same, so the magnetic field due to these 3 individual part will be also equal. So we can say that
magnetic field due to AD section should be equal to magnetic field due to DC, which is equal to magnetic field due to CB section, okay, and which is given by mu naught, current is I by 4 multiplied by 2 pi, let's say the distance from wire to center is R, okay. So this becomes mu naught I divided by 8 pi R, okay. So now let us check what is the direction of magnetic field due to these three sections, okay, these three straight wires. So as we know that the direction of magnetic field can be found by right hand thumb rule. Thumb is the direction of current, then curved finger will give the direction of magnetic field. So due to this section, the magnetic field will be inward, okay. Due to this section, we can also see due to DC section, the magnetic field will be also inward, and due to CB section, the magnetic field will be also inward. So due to these all three sections, magnetic field is in same direction with same magnitude. So we can say total magnitude due to this part, let's say B1, will be 3 multiplied of mu naught I divided by 8 pi R, okay. Now we'll calculate the magnetic field due to AB section, okay. So let's say magnetic field due to AB section will be given by mu naught, the value of current flowing through this part is 3I by 4, that is 3I by 4, okay, multiplied by 2 pi R, which is equals to 3 mu naught I divided by 8 pi R, okay. Now let us check the direction of magnetic field due to this section. So this is the direction of current, so the direction of magnetic field will be outward, and due to these three sections, the direction of magnetic field is inward, and we can see the magnetic field due to these three sections, AD, DC and CB, and the magnitude of magnetic field due to AB section are equal in magnitude but opposite in direction. So at the center, the net magnetic field will become 0. So our correct answer will be 0 only at the center of loop. So A is our correct answer. Okay. So here we have to match the column 1 with column 2. There are some combinations of lenses, and it is said that the focal length of convex lens is 40 centimeter and the focal of concave lens is 50 centimeter. So we have to check which is the correct sequence, okay. So let us start from first one. So these three are convex lens of focal length 40 centimeter. We know that the focal length of convex lens is positive and concave lens is negative. So we know that for these three, we can check the focal length. F is equals to, the formula is F by N, and that is 40 divided by 3 centimeter. This is the equivalent focal length for this combination. In second column, the power is given. We know that the formula for power is P is equals to 1 upon F. Because the power is given in diopter, so we have to convert centimeter into meter. For that, I am putting here 100. So it becomes 100 divided by 40 divided by 3, which becomes 300 divided by 40. So 30 upon 4, that is equals to 7.5. So for P, we can say the 2 is correct, okay. So I am writing here 2. Here there are two convex lens and one is concave. So for this, let us calculate the equivalent focal length by the formula 1 by F equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 and etc. Okay. So 1 upon F is equals to, for these two convex lens, I can write 1 upon 40 plus 1 upon 40. The focal length of concave lens is negative, and that is 50 minus 1 upon 50. Okay. On solving this, it becomes 2 upon 40 minus 1 upon 50, and that is 1 upon F is equals to 1 upon 20 minus 1 upon 50 is equals to, on taking LCM, 20 multiplied by 50, that is 50 minus 20. Okay. So it becomes 30 divided by 1000. Okay. So F becomes equals to 1000 divided by 30, that is 100 divided by 3.
Okay, so the power will be P is equals to 100 divided by 100 by 3. On solving this, the power becomes 3 diopter. So for Q, we can see the correct option will be 3. So similarly, we have to solve this combination. So I can see here the correct sequence is started from 2, 3. So 2, 3, that means on solving these two, we can directly say the correct answer is option D. Okay. Next question, question number 4. In a closed electrical circuit, a battery of 12 volt, let us write the given quantities. Voltage is given 12 volt, okay, is connected to a resistor of 3 ohm. Value of resistance is given 3 ohm. If the wire used in the circuit of 3 meter has 1 ohm per meter resistance, that means each meter consists 1 ohm resistance and the length of wire is 3 meter, that means length is given 3 meter, okay. Which of the following values correctly represents the current flowing and the energy consumed in 10 seconds? That is, time given here is 10 seconds. Okay, so let us find the value of current first. We know that I is equals to V by R. What is the value of V? 12. R is 3. So directly we can say the answer is 4 ampere. If you want to find out the energy consumed, the formula for energy consumed, let's say H is equals to VIT. So value of V is 12 multiplied by 4 multiplied by 10. It becomes 48 multiplied by 10, that is equals to 480 joule. Okay, so correct answer is option C. Okay, next question, question number 5. Two conducting bars of radius R and 2R are kept in contact as shown in the figure. An electric current I is passed through the bar and the length of each bar is L by 2. Also, both bar are made of same material. Okay, so we can say the radius of this bar is R and this is twice, that is 2R. Both are in series. So we know that in series the value of current is same. So we have to check which of the following statements, out of these statements, which of the following is incorrect. Okay, the first one is heat produced in the bar Lm is 4 times the heat produced in bar Mn. As we can see here, the value of resistance is given by R equal to rho L upon A. We can see the length of both wires are same. Okay, but the cross section area of both bar is different. We can see here the value of cross section area is given by pi R square. So this is the resistance of Lm bar because it has radius R. Okay, when we talk about Mn bar, so Rmn becomes rho L. I am writing value L and L is equals to L by 2 here. Okay, so don't confuse here. The value of A will become pi, radius is 2R, so it becomes 4R square. Okay, so which is equals to, if I can put value of this from here, it becomes RLM divided by 4. That means Rmn is equals to RLM divided by 4. That means the resistance of Mn bar is 1/4 of resistance of Lm. Okay, and we know that the formula for heat is given by, because both are in series, so we'll use formula I square RT. R is resistance. So we can see here the heat produced will be more for the bar having higher resistance, as we know that the resistance of Lm is 4 times of resistance of Mn. So the heat produced in Lm will be 4 times of the heat produced in Mn. So heat produced in Lm bar is 4 times the heat produced in the bar Mn. This is a true statement. Okay, electric current in both bar is equal because both are in series. This is also correct. Potential difference across Mn is 4 times that of across Lm. So this is wrong statement. Okay. Heat produced in any of the bar is proportional to its resistance. This is also true, as we have discussed here. So we have to pick the incorrect one. So our correct answer is option C. Okay. Next question. So this is an assertion reason question. Okay. Two wires of same material and length but different cross section area have different resistance. As we know that value of resistance is given by rho L upon A. If cross section area is different, definitely
the value of resistance will be different because rho and L is same, but A is changing, so R will also change. This is a true statement. Okay. Resistance of a wire is directly proportional to its cross section area. No, this is wrong because resistance is inversely proportional to the cross section area, so this is false. So our correct answer will be assertion is true but reason is false. Okay, C option is our correct answer. Next question based on paragraph. Next two questions. Okay, so here a situation is given, mirror formula is given, and a dentist is using a concave mirror, okay, which is having focal length f is equals to 5 centimeter. If we will use sign convention, we know that the focal length of concave mirror is negative. Okay, and the tooth is placed 2 centimeter away from the mirror, that is u is minus 2 centimeter. Okay, so let us check what is asked in question. What is the nature of image formed in the above case and what is the approximate magnification? So as we know that focal length is 5 and object is placed at 2 centimeter. So that means we can see the object is placed between pole and focus point, and in that case the image formed is behind the mirror, which is virtual and large and erect. And if the image is large, then definitely the magnification will be positive and which will be greater than 1. So the image formed will be virtual, erect and magnification more than 1. So we can see in option B, virtual, erect, magnification more than 1. That means option B is our correct answer. Okay. Next question. Question number 8. If the dentist moves the mirror to a new position such that the tooth is now 10 centimeter from the mirror, we know that the focal length was minus 5 centimeter and new position of object is u is equals to minus 10 centimeter. That means the object is placed at R, that means center of curvature, and whenever the object is placed at center of curvature, then image is also formed at the same place, which is equal in size, inverted and real in nature. So the image becomes smaller and real. No, image size will be equal. The image becomes erect and more magnified. No, this is not correct. The image becomes real and inverted. That is option C is our correct answer. Okay. Next question. Question number 9 is also assertion reason. Negative magnification indicates that the image formed is virtual and upright. No, this is a false statement. Negative magnification represents that the image form is inverted and all the inverted images are real in nature. Okay, so this is a false statement. Convex mirror by nature cannot form real and inverted images due to their divergent reflection. This is a true statement because convex mirror are diverging in nature. Okay, so our correct answer is assertion is false while reason is true. So the correct option is option D. Question number 10. Arrange the following steps, correct sequence for calculating the equivalent resistance of complex circuit consisting of a series parallel combination of resistor. Okay, so as it is suggested to start from parallel one. So first of all, identify all resistors connected in parallel and calculate their equivalent. Okay, then what we'll do, replace the equivalent resistors in the original circuit. That is also true. This is correct sequence. Then identify the resistors in series and calculate their equivalent. This is also in correct sequence. Add all equivalent resistance to get the total resistance. So PQRS itself, the question is in sequence. So option A is our correct answer, PQRS. So we have discussed all the questions for class 10th physics. For more update, please subscribe Matrix YouTube channel. Thank you very much. Hello everyone, now we are going to discuss part 2 chemistry for class 10th. Let's discuss with the questions. Identify the correct matching for a strongly acidic solution. Yes, as we know that pH for a strongly acidic solution lies between 0 to 3. Let's take the options. Option A, pH equal to 13 gives pink in phenolphthalein, and this is correct for a basic solution. Option B, pH equal to 2 gives red in litmus, and this is for a strongly acidic solution. So it may be the correct answer.
pH equal to 7 gives orange in methyl orange, and this is for a neutral medium. So it is not the correct option. D, pH equal to 9 gives red in turmeric, and this is true for a basic solution. So the correct option is B. Now the next question is, 4 students Ravi, Nisha, Kavya and Shan noted the initial color of the solution kept in beaker 1, 2, 3 and 4. After inserting zinc rod in each solution and leaving them undisturbed for 2 hours, the color of each solution was again noted in the table. And this is the table in which initial and final color is noted by each student. Which student observed the color change in second and 4 beaker correctly? Let's discuss what about the beaker 2. In this beaker, zinc sulfate and zinc metal is reacted, then there is no any reaction because the metal is same as present in the metal salt solution, and this is for the beaker 2. And as we know, the solution of zinc sulfate is colorless, and as there is no reaction, so the final color remains colorless. Now in beaker 4, there is zinc metal is kept in copper sulfate solution, and the solution is blue in color, and metal zinc is more reactive than copper, so it displaces copper ion from its salt solution, so the reaction gives us zinc sulfate and copper metal, and the zinc sulfate solution is colorless. Now check the options. A, Ravi and Kavya. Let's check. Ravi find the initial color as colorless in beaker 2 and final color is also colorless. That is true for the beaker 2. And blue color as initial and final color colorless in beaker 4. This is again the true. So Ravi finds correctly. But Kavya, as we know that Kavya finds colorless initially and finally colorless in beaker 2, that is correct, and blue initially in beaker 4 but light blue finally, that is not correct for the beaker 2, so Kavya finds incorrectly. Now this option is wrong. B, Nisha and Shan. Let's take Nisha. Nisha finds light blue initially and colorless finally in beaker 2. That is not true, so Nisha finds incorrectly. Now Shan finds colorless initially and finally again colorless for beaker 2. That is correct. And for beaker 4, he finds blue initially and colorless finally. That is also true. So Shan finds correctly for beaker 4 also. So according to Nisha, the B option becomes wrong. C, Kavya and Nisha. Kavya and Nisha both finds incorrect observations in beaker 2 and 4, so it is also incorrect. D, Ravi and Shan. Yes, Ravi and Shan both finds correctly the color change in beaker 2 and 4, so this D option is correct for this question. Now the next question is, which is the match the column. Here ammonia and hydrochloric acid and ammonium chloride, this is a chemical reaction in which 2
two compounds combine to form a single product, and these two compounds are base and acid. Base and acid. And this is also apart from combination neutralization. So it belongs to option third. Now dinitrogen oxide, this is a single molecule. After decomposition it forms two products, that is nitrogen and oxygen. So the dinitrogen oxide is decomposed, and this is called decomposition reaction, and a lot of heat is evolved during this process, so it resembles with second. Now nitrogen sulfide and copper nitrate, these are the two compounds and which gives copper sulfide and NaNO3 after the double displacement reaction, because there the ions are exchanged between the two compounds, and the color of copper sulfide is black and it is insoluble, so it is called PPT precipitate. So this reaction is double displacement and as well as for the precipitation also. Now the next, nitrogen and oxygen gases combine to form nitrogen oxide. This process is combination reaction, and as it absorbs a lot of heat, so combination and endothermic, so it resembles with the option A. Let's check the answer. P, Q, R and S. For P, we see that it is 3. For Q, it is 2. For R, it is 4. And for S, it is 1. Let's check the options. A, 1, 2, 3, 4, it is wrong. B, 4, 3, 2, 1, it is also wrong. C, 3, 1, 4, 2, it is also wrong. D, 3, 2, 4, 1 and 3, 2, 4, 1, it is the correct answer. Take the next question. Which of the following statement about the source of bases is incorrect? We have to find incorrect source. Now take first option, that is sodium hydroxide is prepared by electrolysis of brine. As we know that the solution of NaCl in water, it is called as brine, and when current is passed, electricity is passed in this brine solution, it will electrolyzed to form sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas, and this is the sodium hydroxide which is prepared by brine. So this is the correct statement. Now calcium hydroxide is prepared from quicklime. Yes, quicklime, that is CaO, when mixed with water, then slagged lime, that is calcium hydroxide, is formed. So this is also the correct statement. Ammonium hydroxide is the component of bleaching powder. No, this is incorrect, because ammonium hydroxide and this is bleaching powder, and for bleaching powder ammonium hydroxide is not a component, so this is incorrect. Magnesium hydroxide is found in antacid. Yes, this is again a correct statement, as magnesium hydroxide, that is milk of magnesia, it is the main component of antacid. So this is the correct statement. So according to question, we have to choose incorrect, and the incorrect statement is C. This is the answer. Now take the next question. KMnO4 and HCl gives us KCl, MnCl2, Cl2 and H2O. This is a chemical reaction in which potassium permanganate reacted with hydrochloric acid. Now what is the ratio of KMnO4 to HCl in the balanced equation? So to find the ratio, we have to balance the equation, and
After balancing, we get stoichiometric coefficient for KMnO4 2. For HCl, this is 16, and for KCl, it is 2. MnCl2, it is again 2, and for Cl2, it is 5, and for water, it is H2O. And the ratio for KMnO4, that is potassium permanganate, and hydrochloric acid is 2 and 16. And after simplify, we can also get 1:8. So we have to find the option correctly. First option is 2:16, that is correct. But B option, that is 2:10, it is wrong. C option is 2:8, it is also wrong. And D option is 1:4, this is also the wrong option. So the right answer is option A, 2:16. Now we take the next question. This is the assertion-reason type of question, in which assertion states that pH of strong acid is lower than that of weak acid at same 1 into 10 raised to power minus 3 m concentration. Yes, it is absolutely true, because as we know that strong acids are completely ionized in their aqueous medium, while weak acids are partially dissociated. So take the reason. Strong acid ionize more and release more H plus ions, which is also true, and correctly explain the statement. Now the answer is A. Both assertion A and reason R are the true, and reason R is a correct explanation of assertion A. Yes, this is the true answer, correct answer for the assertion reason type question. Next, paragraph based question 17 and 18. Washing soda is a basic salt, exhibits cleaning properties. It is used as a water softener. It is also used in glass, soap and paper industries. Upon heating, washing soda loses its water of crystallization and becomes anhydrous sodium carbonate. It is resemble with the water of crystallization. Let's take the question. What is the chemical reaction when washing soda is used to remove permanent hardness? Yes, washing soda is used to remove permanent hardness, because in hard water there are some ions, calcium and magnesium ions. Because of these, water becomes hard. So take the choose the correct option. Calcium chloride react with sodium bicarbonate to make calcium carbonate and NaCl. But here this is hard water, but this is not washing soda. So this option is wrong. Now B. Magnesium chloride, this is taken as hard water, and Na2CO3, this is washing soda, gives us MgCO3, the white PPT of formed, MgCO3 is formed, and NaCl, and this white PPT can be filtered out from the water and it becomes soft. So B option is correct according to question. Now C option, in which this is taken as hard water, but sodium hydroxide is not the washing soda, so it is wrong. D. ZnSO4, it is not hard water, and Na2CO3, that is washing soda, so it is also the wrong option. So correct option is B, that is magnesium chloride hard water reacted with washing soda to gives white PPT. Now take the next question. If you leave washing soda crystals exposed to air for a long time, they lose water and becomes powdery. What is the correct explanation? Let's see what will happen when washing soda is exposed to air. Then it takes heat from its surrounding and their water of crystallization lose, and it becomes powdery substance, that is soda ash. Let's take the answer.
from the options. Option A is washing soda sublimate and loses water of crystallization. No, washing soda is not sublimate. Next, B, it oxidizes to form soda ash. Here it is not the oxidation reaction because each element do not change its oxidation state, so it is also wrong. It undergoes efflorescence and loses water of crystallization. Yes, this is perfectly correct option because when washing soda exposed to air, then it loses its water of crystallization, and this process is called efflorescence. It ferments in moist air. No, it does not ferment, so D option is also wrong. Let's take the next question. Assertion reason. In CaMnO4, the oxidation state of manganese is +7. Let's check the assertion is true or false. CaMnO4, in which potassium has +1 oxidation state, plus if we take the oxidation state of Mn equal to X, plus there are 4 oxygen having -2 oxidation state, and the overall charge on CaMnO4 is equal to 0, so X will be +7, and we find that assertion is true. Now reason, each potassium contributes +1 and each oxygen contributes -2. Yes, each potassium contributes 1 and each oxygen contributes -2. So this is also true and helps to explain the assertion. Let's check the answer. A, both assertion A and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. So this is the correct answer, and both 3 options are not. So take the next question. This is sequence based question. Arrange the following steps in the correct logical sequence to explain how oxidation leads rancidity in food. Yes, rancidity is the spoilage of food due to the oxidation of food material in atmosphere. Let's check the steps. First is given, fats and oil reacts with oxygen in the air. Second, unpleasant smell and taste develop in the food. Food is exposed to air for a long time. Oxidation of fatty acids leads to formation of peroxide and aldehydes. In these 4 steps, we have to choose third as a first step because in this, food is exposed to air for a long time. After this, we have to choose step 1, that is, after exposing the food, the fats and oil reacts with oxygen and oxidizes. So first, now after this, due to the oxidation of fatty acids, peroxides and aldehydes are formed. Now the next step is 4, and because of the formation of peroxides and aldehydes, the food gives bad smell and bad taste. So now this is the second step taken as last. Now choose the correct option from the options. First is 3, 1, 4, 2. Yes, 3, 1, 4, 2. It is the correct answer. B, 1, 3, 2, 4, that is wrong. C, 3, 4, 1, 2, that is also wrong. D, 1, 4, 3, 2, that is also wrong. So this is the part 2 chemistry. Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे
तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे, जिसको आप इसी आईडी पर लॉग इन करके देख सकते हैं। Thank you very much. Hello student, welcome to Matrix High School. Today we discuss about Matrix Olympiad paper solution for class 10th biology portion. Let's start. First question for biology. New plants may be grown from groups of cells that are taken from the same and other plant, same plant or other plant. The given diagram show a part of plant X. This is a part of plant X. Okay. New plant may be grown from group of cell. Mean to say this part, this part, this part, these are the all part group of cells. But according to diagram, according to question, cell sample obtained from which of the labeled structure? P, Q, R, S. Which of labeled structure will grow into new plants that are genetically identical? That are genetically identical to plant X. Mean to say genetically identical mean clone. According to question, grown from group of cell, same or different other plant. In this case, P are pollen, Q are pollen tube, and next these are the structure that ovule mean contain egg cell. So egg cell directly development into new fruit or seed part. These are the genetically similar to their parent body. So according to this case, this situation, our answer is C, R. R mean ovule or egg part. Egg part directly convert into new seed. This is without pollen, without any kind of fertilization. So this is directly develop into new plant or new organism. So structure will grow into new plant that are genetically identical. So right answer is R or option C. Option C is correct. Next question. Observe the given graph representing hormonal level during a normal menstrual cycle in a female. This level is level of hormone in blood, and these are the days, monthly days, menstrual cycle 14, 15. These are the peak level. These are the peak level of hormone. These are the peak level of hormone. So according to this chart, identify the ovarian hormone X, identify the ovarian hormone X and Y, and select the correct statement regarding them. Option A is if hormone Y is insufficiently produced in a female, then uterine lining might not be sufficiently stable to support an implanted embryo. In given graph, X is
estrogen and Y is progesterone. Progesterone. So, if X is increase during the 14th day, then ovulation start. If progesterone, Y hormone increase during the 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. So in this case, lining of uterine endometrium is repaired. During these days, lining of endometrium is rupture, breakdown during the menstrual phase, bleeding phase, but in these days, these are repaired and stable and suitable for implantation. So, according to this chart, if hormone Y mean progesterone is insufficiently produced, if insufficiently amount decrease in a female, then uterine lining might not be sufficiently stable to support the implant embryo. This is right. Option A is right. Level of hormone P mean progesterone is very high during the mens. No. During the mens, X level is high. Hormone X is secreted by corpus luteum. Hormone X, estrogen, not secreted. Hormone Y secreted by the corpus luteum. Next, hormone X stimulate transformation of primary follicle. Hormone X not stimulate. Hormone FSH, follicle stimulating hormone, FSH stimulate this condition. So D is wrong. Option A is correct for this question. Next, 23rd, match the column. Match the column first and second. Graphian follicle surround the ovum before ovulation. Graphian follicle match with second, surround the ovum before ovulation. Next, corpus luteum hormone secreting structure after ovulation. Corpus luteum secrete progesterone hormone. Next, cleavage series of mitotic division, 2n to 2n, series of mitotic division forming morula. Gastrulation is rearrangement of cell into three germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. These are the three layers for develop embryo and form so many organ for organism. According to this match, 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4 in option B. Option B is correct for this. Next question is 24th. If the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, then there is a high possibility of formation of, if embryonic cell are divided into two group, okay. This is zygote, embryonic cell divide into two group by mitosis. Now this is develop into embryo, this is develop into embryo. In this case, if these are divide but not separate, in case these are joint with each other and develop in jointed condition, embryo and embryo. These are the two condition. Genetically different twin girls, no. Genetically identical twins,
mean to say girl, girl, boy, boy, girl, girl, or boy, boy. Siamese twin. Siamese mean jointed twin. Jointed twin. Genetically different twin boy. No. Genetically identical twins. Genetically different one boy, one girl. No. Because these are formed from one zygote. These are called monozygotic condition. So, option B is correct in this case. If option contain separate this condition, so option B is correct in this case. Siamese jointed embryo develop into two girl or two boy, genetically identical. Option B is correct option. Next, the given diagram show a congenital defect in which the ventricular septum of human heart fail to form fully, resulting in a hole in the heart. Mean to say a hole present between ventricular, right or left ventricular, right ventricular. In this case, oxygenated blood mix with CO2 deoxygenated blood and pressure reduce. In this case, which of the following would not be likely consequence? Would not be likely consequence of this disease? Reduction in the pressure. Yes, of course. Reduce the pressure of blood in aorta, leaving through the aorta. A reduction in the percentage of oxygenated blood in the aorta, right? Because oxygenated blood mixed with CO2. Next, reduction in the amount of the oxygen brought to the body cells, right? Because CO2 deoxygenated blood mix in ventricular part. Next, a reduction in the pressure of blood entering the lungs, because in this case pressure is increased, not reduced. So option D is correct answer for 25th. Next question is assertion A, amount of water reabsorbed depend on how much excess water in the body. Absorption depend, reabsorption depend on water amount. If water amount reduce, absorption high. Water amount excess, absorption down. This is the correct, true statement. The basic filtration unit is nephron. In the kidney contain a cluster of very thin-walled blood capillaries. These are related to filtration and this point relate to reabsorption. Reason 8 not explain assertion. So assertion and reason right, but R is not a correct explanation of assertion. Option B is right answer for this question. Next, paragraph for 27 and 28. Respiration is an energy releasing enzymatically controlled process. Enzymatically controlled process which involve a stepwise oxidative breakdown of food substances inside living cell. The oxidative breakdown of respiratory substrate like glucose, carbohydrate with the help of atmospheric oxygen is aerobic respiration. Its mean C6H12O6 plus oxygen, breakdown of carbohydrate in the presence of oxygen. Glucose is completely broken down into CO2 and H2O in this process of oxidation and a large amount of energy is produced.
Question according to paragraph. The pathway of respiration common in all living organism is X. It occur in Y and product formed are two molecule of Z. Identify X, Y, Z in the above paragraph and select the correct answer. According to paragraph, X pathway of respiration, that is glycolysis. Glycolysis is a process that is found in cytoplasm. Breakdown of glycolysis in cytoplasm form pyruvic acid. So according to question, X all in living organism, that is glycolysis, occur in cytoplasm Y and product 2-pyruvic acid Z. X is glycolysis, Y is cytoplasm and pyruvic acid. Option B is correct, because mitochondria site of after pyruvic acid, mean to say Krebs cycle formed or proceed in mitochondria. So option B is correct. Next question is, number of oxygen molecule utilized in glycolysis. In glycolysis, zero number of oxygen utilized. It's mean option A is right, because C6H12O6 in cytoplasm break down in pyruvic acid, then enter into mitochondria, then pyruvic acid break down in the presence of oxygen, mean to say oxygen utilized in mitochondria. In this case, no oxygen utilized. So our right answer is option A, 0. Next question. Assertion A. Tubectomy is an intrauterine contraceptive procedure that prevent fertilization by blocking sperm entry into the uterus. Tubectomy, a procedure that cut or block the fallopian tube. So, intrauterine contraceptive procedure that prevent fertilization by blocking sperm entry in the uterus. If sperm enter in the uterus but not transfer, not fertilize with egg. So this statement in assertion is wrong. Tubectomy is a permanent surgical method in female involving the removal or tying the portion of fallopian tube by thereby preventing the meeting of egg and sperm. So this is reason is right. Assertion is wrong and reason is right. According to option D, assertion A is false, reason 2. D is right answer for this question. Next, which enzyme are likely to act on the baked potato eaten by a man starting from the mouth? Mouth mean buccal cavity, as they move down the alimentary canal. Buccal cavity to food pipe, down alimentary canal. They move down the alimentary canal. Which enzyme? Pancreatic amylase? No. Pancreatic amylase? No. Disaccharide like maltase? No, because maltase
use in next step. Salivary amylase in buccal cavity, salivary amylase in buccal cavity. Next in food pipe, pancreatic amylase and disaccharidase, salivary maltase, no. Next step going in stomach and then in small intestine, then in large intestine. Salivary amylase, then pancreatic amylase when hepatopancreatic duct release pancreatic juice and bile juice, and then disaccharidase enzyme work there. So baked potato digestion start from buccal cavity to small intestine, buccal cavity to start, and then next step in stomach, next step in small intestine. So option C is correct for 30th question. These are the all solution for biology portion, and for more updates subscribe our YouTube channel. Thank you. Hello and welcome to paper solution of class 10th mathematics, and our 31st question is, if x minus a x minus b equal 1 and a minus b plus 5 equal 0, find the value of x minus a cube minus x 1 upon x minus a cube. See, so a minus b here, it can be written as x minus b minus x minus a. Okay, so from here a minus b plus 5 will be the x minus b minus x minus a plus 5 equal to 0. Now the value of x minus b from here, x minus b will be the 1 upon x minus a, so that will be the 1 upon x minus a minus x minus a and plus 5 in that side, that will be the minus 5. Now we can write x minus a minus 1 upon x minus a equal 5. हमने minus 1 क्या ले लिया, common. Now see here, that is y minus 1 upon y equal 5. Okay, or this is y cube minus 1 upon y cube. So if y minus 1 upon y equal 5, then y minus 1 upon y cube will be the 5 cube. Okay, so that will be the y cube minus 1 upon y cube minus 3 into y minus 1 upon y equal 125. So from here y cube minus 1 upon y cube, that is the x minus a cube minus 1 upon x minus a cube minus 3 y minus 1 upon y, that is 5 equal 125. So जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140. So x minus a cube minus 1 upon x minus a cube will be the 140. Option D will be the correct answer. In 32 question, a polynomial p of x has real coefficients. When px is divided by x minus a, the remainder is 5. When px is divided by x plus 2, remainder is minus 1. Find the remainder when px is divided by x minus 1 into x plus 2. The following steps are involved in solving the problem given above. Arrange them in sequential order. ये आपके पास में steps है. हमें आपके पास में जब सेम पोलिनोमियल px में x minus 1 x minus 2 का जब डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास में जो रिमाइंडर निकालने के लिए जो आपके पास में स्टेप्स है, हमको उनको क्या करना है, अरेंज करना है. तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपको इसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, डिवीजन एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, तो आपने सबसे पहले पहला स्टेप क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने, क्योंकि रिमाइंडर निकालने का यही तरीका है. तो आपके पास में पहला स्टेप हो गया टी. ओके, आफ्टर दैट आप
एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपको x माइनस 1 x प्लस 2 का डिवाइड करना है। इसका मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिवाइड करते हो। तो आप जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर रहता है वो आपके पास में एटमोस्ट क्या हो सकता है, लीनियर पोलिनोमियल हो सकता है। तो आपके पास में लीनियर पोलिनोमियल जनरली हम ax प्लस बी की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आपके पास में जो रिमाइंडर है उसको आप क्या कंसिडर करोगे, ax प्लस बी। तो ये आपका हो गया सेकेंड। इसके बाद में आप देखते हो कि रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए तो आपके पास में यहां से देखो रिमाइंडर गिवन है x माइनस ए से डिवाइड करने से रिमाइंडर 5। इसका मतलब p ऑफ 1 कितना आएगा 5 और p ऑफ माइनस 2 कितना आएगा -1 आएगा। तो दैट इज स्टेप 4। फिर यहां से आपके पास में जो दोनों वैल्यू आई वो आप क्या करते हो, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हो। यहां से x की वैल्यू आएगी सोल्व करने से, और फिर आपके पास में a और b के लिए सोल्व करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपके पास में स्टेप हो जाएगा, ये 4th स्टेप हो जाएगा, और ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, 5th स्टेप हो जाएगा। तो आपके पास में करेक्ट सीक्वेंस हो गई TPQRS। तो यहां से TPQRS ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्वीट सेलर हैज 420 gulab jamuns and 130 rasgullas. He wants to pack them in box with equal number of item in each box. Maximum number of item in each box is. तो each box में maximum कितने आइटम हो सकते हैं, इसके लिए अपन को HCF निकालना पड़ेगा। तो 420 और 130 का जो HCF होता है वो कितना होता है आपके पास में 10 होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास में assertion and reason का कि if px square minus 2x plus 2 has no real roots then p is greater than 1 by 2, and reason है the equation a square plus b square of x square plus 2 of ac plus bd of x plus c square plus d square equal to 0 has no real roots if ad is not equal to bc. First of all check the assertion। तो has no real roots के लिए आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज शुड बी लेस देन 0। तो यहां से आपके पास में b की जो वैल्यू होगी यहां से कंपेयर करोगे तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है p इंटू c की वैल्यू है 2 इज लेस देन 0। तो 4 माइनस 8p लेस देन 0, 4 इज लेस देन 8p। So 4 upon 8 is less than p, that is 1 by 2 is less than p. It means p should be greater than 1 by 2. It means our assertion is correct. And after that we will check the reason. The equation a square plus b square of x square plus 2ac plus bd of x plus c square plus d square has no real roots if ad is not equal to bc. First of all check it, is it correct or not. तो सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज शुड बी लेस देन 0 फॉर द नो रियल रूट्स। ओके, सो यहां से जब कंपेयर करते हो तो आपके पास में b क्या हो जाएगा 2 ऑफ ac प्लस bd, तो डेट इज 2 ऑफ ac प्लस bd होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। सो व्हेन यू विल स्क्वायर इट 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। ओके, माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इज लेस देन 0। सो देखो a स्क्वायर c स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर d स्क्वायर से b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd इज लेस देन 0। सो यहां से आपके पास में ये बनेगा ad माइनस bc होल स्क्वायर लेस देन 0। सो देखो ये कभी भी आपके पास में लेस देन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके पास में ऑलरेडी स्क्वायर है और किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपके पास में अगर रियल हो तो उसके लिए क्या हो जाए, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब इसमें जो रूट्स आएंगे
वो आपके पास में क्या आएंगे, नो रियल रूट्स ही होंगे। अगर ये 0 नहीं हुआ तो अगर AD माइनस BC इक्वल टू 0 रखोगे तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC। अगर ये 0 नहीं होगा तो इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका मतलब रीजन भी आपके पास में ट्रू है। तो एसेरेशन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट आप चीज ऑब्जर्व करते हो कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां से आप लिखते हो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होना चाहिए, इसलिए आपके पास में बोथ एसेरेशन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेरेशन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, if the roots of the equation a square minus bc of x square plus 2b square minus ac of x plus c square minus ab equal to 0 are equal, तो 4 इक्वल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा ये 2 ऑफ b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस bc इंटू c स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। ओके, सो यहां से आप 2 का स्क्वायर किया हो जाएगा 4 माइनस 4, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो अपन 2 को स्किप करते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर सॉरी प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac। ओके, एंड ये हो जाएगा आपके पास में माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a क्यूब b माइनस b c क्यूब प्लस a b स्क्वायर c इक्वल टू 0। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर ac माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a क्यूब b प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से माइनस 2b स्क्वायर ए सी और माइनस ए बी स्क्वायर सी, ये हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर ए सी। तो ये हो जाएगा आपके पास में b की पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर ए सी इक्वल टू 0। यहां से b आप कॉमन ले लोगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में b क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following statements are true or false? First, in triangle ABC, D and E are points on AB and AC. D and E are points on AB and AC. Such that DE parallel BC. It means आपके पास में ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC आपके पास में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और AD रेशियो DB आपके पास में 3:2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाली साइड 3K हो गई और DB कितना हो गया 2K। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ADE टू ABC। तो यहां से इसकी जो साइड होगी वो कितनी हो गई आपके पास में 5K हो गई। तो यहां से दोनों ट्राइंगल के आपके पास में जो साइड का रेशियो है AD और AB का, वो हो गया आपके पास में 3:5। ओके, तो अब इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो आपके पास में साइड के स्क्वायर के रेशियो को क्या होगा, इक्वल। तो इनके आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो रेशियो होगा वो इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में साइड कितनी है 3K, तो 3K का स्क्वायर कितना होता है 9K स्क्वायर रेशियो 5K का स्क्वायर 25K स्क्वायर, K स्क्वायर से K स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास में रेशियो कितना आएगा 9 रेशियो कितना आएगा 25। तो पहला वाला जो आपके पास में स्टेटमेंट है ये आपके पास में क्या है, ट्रू है। सेकंड कह रहा है कि आपके पास में टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस, आपके पास में सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड इज आल्सो ट्रू। थर्ड, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए एल्टीट्यूड इज √3/2 एब्सोल्युटली करेक्ट। आपके पास में जो हाइट होती है वो √3/2 ए होती है। फोर्थ कह रहा है द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल
डेफिनेटली आपके पास में ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया जा सकता है। इसका मतलब आपके पास में चारों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज मीडियन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज मीडियन। पी एस अगर मीडियन है इसका मतलब ये आपके पास में क्यू आर को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा। पी क्यू इक्वल पी आर इक्वल 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर्स एंड क्यू आर इक्वल 12। अगर आपके पास में क्यू आर है तो ये 6 हो जाएगा। अब नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपके पास में इक्वल साइड का जो आपके पास में कॉमन वर्टेक्स होता है उनके बीच से थर्ड साइड पर डाला गया जो आपके पास में चाहे आपका मीडियन हो, चाहे आपके पास में एल्टीट्यूड्स हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर होता है, ये वो उसको क्या करता है 90 डिग्री पर थर्ड साइड को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से ये और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपसे पूछा क्या द लेंथ ऑफ पीएस पूछा, मतलब हाइट पूछे, तो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम आपके पास में ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का रूट, यानी दैट इज 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म दैट इज h मीटर अबव। एक पर्सन एक h मीटर अबव प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इन द स्काई इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम क्लाउड। यहाँ से सेम क्लाउड का आपके पास में रिफ्लेक्शन बन रहा है और ये जो रिफ्लेक्शन है ये कितना है आपके पास में बीटा। अज्यूमिंग दैट द क्लाउड एंड इट्स रिफ्लेक्शन लाइज ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ से आपके पास में मान लो अगर क्लाउड सी है तो यहाँ से ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर ये h है तो मान लो ये आपकी y है और ये इसको x कंसीडर कर लो, और यहाँ से ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये आपके पास में हो जाएगा आपके पास में h प्लस वाई, ओके है ना। तो ये जो टोटल है ये हो जाएगी आपके पास में 2h प्लस वाई। नाउ अब यहां से अगर tan अल्फा निकालेंगे तो आपके पास में x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन tan अल्फा इन दिस ट्राइंगल, और यहां से हो जाएगा आपके पास में दिस ट्राइंगल में x इक्वल टू 2h प्लस वाई अपॉन tan अल्फा। तो x को एलिमिनेट कर दो आप, x को एलिमिनेट करोगे तो ये हो जाएगा दोनों को इक्वल रखोगे तो y अपॉन tan अल्फा इक्वल 2h प्लस वाई अपॉन tan बीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y tan बीटा इक्वल टू 2h tan अल्फा प्लस y tan अल्फा। ये लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर दोगे, y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन आने के बाद में हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h tan अल्फा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास में 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसका मतलब हमें ये y मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन होता है साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास में हाइपोटेनियस हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब y निकाला क्या आया 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो देखो tan अल्फा से साइन अल्फा डिवाइड करेंगे तो ये जो इसका रिजल्ट आएगा ये 2h tan बीटा माइनस tan अल्फा एज इट इज हो जाएगा, और tan अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या होता है सेक अल्फा। तो आपका जो k आया वो आया 2h सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39 क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज डबल। देखो आपके पास में अगर हाइट क्या आई थी अपने पास में h ली थी, अगर उसको डबल कर देते हैं while keeping angle alpha and the same, how does the distance of the cloud from the point of the observation change। तो आपके पास में जो क्लाउड की जो डिस्टेंस आई थी ऑब्जर्वेशन से वो आई थी 2h
सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आई थी। अगर आप हाइट को डबल कर दोगे तो h का 2h कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में k इक्वल टू 4h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो क्या चेंज आया यहां से, जो k ये भी क्या हो गया आपके पास में डबल हो गया। तो आपके पास में क्लाउड से जो इसकी डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन की वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है मेसदा कॉलम का कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाते हैं और कितना आता है 1। तो इसका हो गया 1। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 65 माइनस टेन स्क्वायर 65, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो Q का फर्स्ट हो गया। R कह रहा द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन कोस A। तो क्या साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कोस A। ये A प्लस B A माइनस B से हो जाएगा 1 प्लस कोस A इंटू 1 माइनस कोस A अपॉन 1 माइनस कोस A। तो कट जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस कोस A, तो R का हो जाएगा 4th। और एस क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 साइन 30 कोस 30 टेन 60। तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और टेन 60 की वैल्यू आपके पास में होती है √3। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, मतलब एस का आ जाएगा 3rd। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा 2143, 2143 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर देन सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा। तो देखो सेक थीटा एज इट इज है ना, तो आप टेन क्यूब थीटा को आप क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा लिख दो इंटू कोसेक थीटा। अब टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और देखो साइन और कोसेक आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाता है आपके पास में सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा, दैट इज आपके पास में हो गया सेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपके पास में सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक क्यूब थीटा। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहां से क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास में 2 माइनस ई स्क्वायर है, तो आप सेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो इसकी पावर कर दो 3/2, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक कार लीव सिटी A at 8 AM and travels towards city B at a constant speed of y km/h. Another car leaves city B at 9 AM and travels towards city A at a speed of 10 km/h faster than the first car. They meet at 11 AM. The distance between the A and B is 300 km. Find the speed of the both car. देखो सबसे पहले क्या करनी है, अपन को दोनों कारों की स्पीड अज्यूम करनी है। मान लो कार A की आपके पास में A सिटी से चल रही है जो कार, उसकी स्पीड आपने ले ली x, इसमें गिवन है y km/h, तो आपने y मान लिया y km/h। और जो सिटी B से कार चल रही है उसकी स्पीड आपने मान ली 10 किलोमीटर ज्यादा, तो मतलब y + 10 km/h। इसके बाद में दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स जा रही है। ये 8 बजे निकली और ये कितने बजे निकली 9 AM पे। सो दे मीट एट 11 AM. इट मीन्स दिस रन फॉर 3 hours एंड दिस वन रन्स फॉर 2 hours। तो आपके पास में y km/h के हिसाब से ये कितना रन किया 3y, एंड ये आपके पास y + 10 के हिसाब से इसने रन किया 2 × y + 10, और दोनों एक दूसरे की तरफ रन करके इसने टोटल जो आपके पास में डिस्टेंस कवर की वो आपके पास में की 300 किलोमीटर। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी और y की यहाँ से वैल्यू आएगी 56।
तो दूसरी कार की स्पीड इसकी तो 56 हो जाएगी और y + 10 मतलब 66। तो अब इसको अगर करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा r, आपने एज्यूम कर ली दोनों की स्पीड, उसके बाद में आपने p के अकॉर्डिंग रखा, फिर इसको आपने क्या किया, यहाँ से सोल्व किया तो आपकी y की वैल्यू आई, y की वैल्यू को आपने यहाँ पर q में रखा तो आपको दूसरी वाली की भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो आपके पास में सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा RPSQ, RPSQ, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन कह रहा है द कंडीशन दैट 3 पॉइंट्स 0, y, x, 0 एंड 1, 1 आर कोलिनियर। तो अगर आपके पास में इनसे बनने वाले अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है दिस पॉइंट विल बी द कोलिनियर। तो आपके पास में यहां से इनका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 x 0 0 y 1 1 और ये हो जाएगा x 0, कोलिनियर के लिए इक्वल टू 0 रख दो तो ये यहां से डिवाइड में जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा x × y + 0 + 0 तो ये हो जाएगा xy माइनस 0 × 0 0 माइनस y माइनस x इक्वल टू 0। तो आप सोल्व करोगे तो xy इक्वल टू x + y आया, दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/x + 1/y इक्वल 1। तो कौन सी कंडीशन बनेगी 1/x + 1/y इक्वल 1, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, SN denotes the sum of n terms of an AP, S2n equal 3SN, then first term is A equal to D/2n + 1। लेट्स चेक। तो S2n equal 3SN, तो यहां से क्या हो जाएगा, S2n से करेंगे तो 2n/2, SN का फॉर्मूला लगाना है, 2A + 2n - 1 × D इक्वल 3SN मतलब 3 × n/2 2A + n - 1 × D। ओके, 2 से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2A + 2ND - D और इधर से हो जाएगा ये 3A + 3/2ND - 3/2D। सो अब ये इधर भेज दो, बाकी सारा उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2ND - 3/2ND मतलब हाफ ऑफ ND और माइनस D और ये हो जाएगा प्लस 3/2D मतलब D/2 और इधर से 3A 2A इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा A। तो आपके यहाँ पर D/2 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बचा n + 1 इक्वल A। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या आएगी n A इक्वल D/2 n + 1 D/2 n + 1 मैच हो रहा है। इसके बाद में रीजन कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज SN इक्वल टू n/2 2A + n - 1 × D, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब एसरेशन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और इसका यही इसमें यूज किया हुआ, इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये आपके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि एन एरोप्लेन वाई फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000, एक एरोप्लेन है जो आपके पास में 5000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, passes vertically above an another plane at instant when the angle of elevation of the two planes are from some point is on the ground are 60 डिग्री and 45 डिग्री। ये आपके पास में एक वर्टिकल पे एक कोई दूसरा प्लेन है, उससे कुछ हाइट पर है, जो आपके पास में एक वाला एंगल बना रहा है 45 डिग्री और दूसरे वाला जो आपके पास में एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री। और अब आपको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी, हाइट निकालनी है। तो देखो अगर ये आपकी h आई, टोटल 5000 है तो ये कितना हो जाएगा 5000 माइनस h। तो अगर ये इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपके पास में 1045 से कितना आ जाएगा 5000 माइनस h। ओके, तो अब रिलेशन निकालना है तो a b c के अंदर आप सब h की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहां से कितना हो जाएगा, टोटल परपेंडिकुलर हो जाएगा 5000 अपॉन बेस हो जाएगा 5000 माइनस h इक्वल 1060 मतलब √3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5000 इक्वल 5000 √3 माइनस √3h। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल 5000 आ जाएगा कॉमन और √3 माइनस 1। तो h की वैल्यू हो जाएगा 5000 √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो हो जाएगा h इक्वल 5000
ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। तो आपके पास में यहाँ से अगर मैच करोगे तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमें एच निकालना है, एच ये आपके पास में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कोस थीटा ए साइन थीटा एंड ए कोमा 0 इज a√2 1 माइनस कोस थीटा। सो ए आपका है ए कोस थीटा ए साइन थीटा और बी पॉइंट है आपका a कोमा 0। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला a x1 माइनस x2 a कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर कोस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा। सो आपके पास में देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो रूट से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 × 1 माइनस कोस थीटा। सो ये इससे मैच हो रहा है तो फर्स्ट वन आपके पास में क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि द पॉइंट्स 0,0 a, एंड a/2, a√3/2 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल लिया जिसके वर्टिसेस 0,0 a, एंड a/2, a√3/2 है। अगर हमें इसकी इक्विलेटरल चेक करना है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम आपके पास में ए बी और ए सी चेक करते हैं एक बार। सो यहाँ से जब आप ए बी निकालोगे तो ये आ जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला √x² + y², वहाँ से हो जाएगा ये √2a, और ये हो जाएगा आपके पास में a² + 4 + 3a²/4 मीन्स आपके पास में ये हो जाएगा a²। देखो का रूट तो a, तो यहाँ से देखो ये √2a आ रहा है, ये क्या आ रहा है a आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो ये इक्विलेटरल नहीं है। सेकंड वन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वन कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a x1, y1, b x2, y2 इंटरनली इन द रेशियो m/n mx2 + nx1/m+n my2 + ny1/m+n। यस इट इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन। सो थर्ड वन इज ट्रू। फोर्थ वन क्या कह रहा है कि द पॉइंट px, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b 2,3 and a 6,-1, then the relationship between x and y is given by the equation 3x - y = 3। तो इसके बीच में रिलेशन अगर फाइंड आउट करना तो px y यहाँ से ये हो जाएगा a 6,-1 एंड b हो जाएगा 2,3। तो रिलेशन क्या हो जाएगा इनके बीच में 2 - 6 into x plus 3 + 1 into y equal 3 square plus 2 square, that is 13 minus 6 square plus -1 का स्क्वायर यानी 37/2। तो ये हो जाएगा आपके पास में -4x plus 4y equal 13 minus 37, that is -24/2, that is -12। सो ये हो जाएगा आपके पास में -4 कॉमन लेने से x - y = 3। यहाँ पर दे रखा है 3x - y = 3, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास में फॉल्स हो जाएगा। सो आपके पास में इसका करेक्ट कोड हो जाएगा TF। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बोट कवर्स a distance of 30 km downstream in the same time as it covers 18 km upstream, if the speed of the boat in still water is 2 km/h more than the twice of the speed of the stream, let the speed of the boat x and speed of the stream y। सो अगर आपके पास में अप स्ट्रीम में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी x - y, एंड डाउन स्ट्रीम में अगर जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी x + y। आफ्टर डेट इस सेज की डाउन स्ट्रीम में जाने पर और अप स्ट्रीम में जाने पर आपके पास में डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर और अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर में जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। इसका मतलब दोनों जो टाइम है T1 = T2 है। तो
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस है 30 और स्पीड क्या हो गई x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है 18 और स्पीड क्या हो गई x माइनस वाई। अब यहां से आपके पास में एक गिवन है कि स्पीड ऑफ द बोट इज 2 more than twice of the speed of the stream। तो यहां से आपके पास में हमें बोट की स्पीड चाहिए, इसका मतलब y को एलिमिनेट करना है। तो y यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 2, इट मीन्स y इक्वल टू x बाई 2 माइनस 1। सो ये हो जाएगा 30 अपॉन x एज इट इज, y की वैल्यू हो जाएगी x बाई 2 माइनस 1, और 18 अपॉन x माइनस y की वैल्यू हो जाएगी x बाई 2 प्लस 1। सो इट विल बी द 30 अपॉन 3x बाई 2 माइनस 1 इक्वल 18 अपॉन x बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 30 इक्वल 27x माइनस 18। सो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 18 इक्वल 12x, यानी 48 इक्वल 12x। तो यहाँ से आपके पास में x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बोट की जो स्पीड है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 48 क्या कह रहा है, इसके लिए पैराग्राफ गिवन है कि आपके पास में ए गर्ल हु इज 90 सेंटीमीटर टेल वॉक्स अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। कि आपके पास में द लैम्प इज सिचुएटेड एट 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। एक आपके पास में लैम्प है जिसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, 3.6 मीटर है। एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है आपके पास में 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर। ओके, अब ये आपके पास में अवे जा रही है इससे लैंप स्टैंड से, और 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गर्ल शैडो आफ्टर शी हैज बीन वॉकिंग फॉर 4 सेकंड। अगर 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 4 सेकंड में वो कितना चली लैंप स्टैंड से, तो 1.2 इंटू 4 मतलब वो यहां से चली आपके पास में 4.8। ओके, तो आपके पास में वो 4.8 मीटर चली। तो इसने कहा कि अब उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी। तो आपके पास में लड़की है तो ये शैडो हो गई, तो आपने शैडो की लेंथ क्या मान ली, x मान ली। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल है आपके पास में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दोनों आपके पास में सेम एंगल से बन रहे हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो क्या होता है आपके पास में, सेम होता है। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में 3.6 अपॉन 4.8 प्लस x इक्वल 0.9 अपॉन x। मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6x इक्वल 4.8 इंटू 0.9 हो जाएगा 4.32 प्लस 0.9x। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 2.7x इक्वल टू 4.32। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1.6। तो इसका मतलब आपके पास में उसकी जो शैडो की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हाउ फार इज द गर्ल्स फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखो 1.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपके पास में अगर वो 4 सेकेंड रन करती है तो आपके पास में वो कितना 4 सेकेंड के अंदर चलेगी, वो चलेगी 1.2 इंटू 4 मतलब 4.8 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर सोल्व भी किया है और वैल्यू भी निकालनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मैच द कॉलम। आपके पास में 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब आपके पास में अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा ले सकते हैं आपके पास में जीरोस। ओके, देन ए इक्वल्स टू, तो अगर आपके पास में यहां पर पोलिनोमियल क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये पोलिनोमियल गिवन है। तो अगर आपके पास में, आपको पता है दो जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपके पास में c बाई a होता है। तो अगर रेसिप्रोकल है उसका मतलब प्रोडक्ट कितना हो गया इनका 1, तो यहां से c मतलब 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 कितना आया आपके पास में 1 आया, तो 6a इक्वल a स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपके पास में सोल्व करोगे तो बनेगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। तो आपके पास में इसमें a की वैल्यू कितनी आएगी 3। क्यों कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 40।
तो यहां से आपके पास में पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास में आएगा 8 और अल्फा डॉट बीटा आएगा आपके पास में k। अब इसने कह रहा है कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो 40 दे रखा है। अब ये कहां से आएगा, आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इधर स्क्वायर करने से आ जाएगा 64। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, k इक्वल 64। यहां से सोल्व करोगे 2k इक्वल 64 माइनस 40, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो q का आंसर फर्स्ट हो जाएगा 12। नेक्स्ट कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर सच दैट वन जीरो इज द ट्वाइस ऑफ द अदर, यानी आपके पास में एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो आपके पास में पहले वाले का क्या होगा, ट्वाइस होगा, यानी 2 अल्फा हो जाएगा। देन k इक्वल्स टू, तो देखो यहां से अगर आप पोलिनोमियल को कंपेयर करते हो तो दो जीरोज का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब कितना आएगा 6। तो यहां से 3 अल्फा इक्वल टू 6, यानी अल्फा की वैल्यू तो कितनी है आपके पास में 2 आई। और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है यानी 2 इंटू अल्फा स्क्वायर वो होता है सी बाई ए, मतलब 2k माइनस 1, a की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो यहां से आपके पास में 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 2। तो 9 अपॉन 2 इसका मतलब ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 सी बाई ए और माइनस बी बाई ए के हिसाब से। अब आफ्टर डेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आपके पास में फॉर्मूला जो होता है यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। वैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है, लेकिन अपन ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दिया ताकि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा दो में ही रहे। फिर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 और अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -2। तो यहां से सोल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा 7 आएगा। तो S का हो गया 7 आ गया, तो यानी P का 2 आ गया, Q का 1 आ गया, R का 4 आ गया और S का 3 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2143 2143। आई होप आपका एग्जाम अच्छा रहा होगा और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अमोफ की वेबसाइट पर लॉगिन करके कोई भी अगर आपकी डाउट एंड क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुँच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुँचा देंगे, जिसको आप इसी ID पर लॉगिन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello student, welcome to Matrix YouTube channel. We are here to discuss the solution of Matrix Olympiad paper of class 10th reasoning conducted on 5 October 2025. Hope you performed very well. So let's get started. So here question number 51. Choose the correct alternative from given one that will complete the series. So series is 2.3, 15.9,
79.6, 423. After 423, next is missing. So first find the pattern. Pattern of the series is 2.3 into 3 plus 3 square. 2.3 into 3, it means 6.9. 6.9 plus 3 square, it means 9. It means 15.9. 15.9. Now it means second term. Now 15.9 into 4 plus 4 square. 15.9, it means 63.6 plus 16. It means 79.6. It means third term, 79.6. Now similar, 79.6 into 5 plus 5 square. 79.6, it means 398 plus 25. So it means 423. Similar, 423 into 6 plus 6 square. 423 into 6. 423 into 6, it means 2538. 2538 plus 36. 2538 plus 36, it means 2574. 2574, it means option A is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 52. 20, 20, 20, 20, 24, 42, 90. After 90, next is missing. So 20 to 20, it means 0. 20 to 24, it means plus 4. 24 to 42, it means 18. 42 to 90, it means 48. And find the next. So 0, it means 1 square into 0, it means 0. 2 square into 1, it means 4. 3 square into 2, it means 18. Now similar, 4 square into 3. 4 square, it means 16. Into 3, it means 48. Similarly, 5 square into 4. 5 square, it means 25. Into 4, it means 100. Now adding 100 in 19, it means 190. So 190 is the next term of given number series. So here option D is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 53. A person is standing in a park facing north. He turns 90 degree to the left and walk 40 kilometer. He turns 90 degree to the right and walks 50 kilometer. He again turns 90 degree right and walks 60 kilometer. Finally, he turns 90 degree to the right and walks 50 kilometer. At what distance is he from the starting point? Before starting this question, we should know that there are 4 types of main direction. This is north, this is east, this is south, and this is west. And there are 4 types of cardinal direction. This is northeast, this is southeast, this is southwest, and this is northwest. According to given question, a man standing in a park facing towards north. Now he turns 90 degree to the left. He turns 90 degree to the left and walks 40 kilometers. So first he goes 40 kilometer towards west direction. Now he turns 90 degree to the right and he turns 90 degree to the right and walks 50 kilometer He again turns 90 degree right and walks 60 kilometer. He turns right and walks 60 kilometer. Finally, he turns 90 degree to the right. And walks 50 kilometer and walks another 50 kilometer. A is the starting point of the person and B is the final point of the person. Now, at what distance is he from the starting point? So find the distance between final point and starting point. So it means find the distance between A and B. So distance between A and B is equals to total is 60 minus distance between these part, it means 40. 60 minus 40, it means 20 kilometer. So distance between starting point and end point is 20 kilometers. So here option C, the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 54. B is to the west of E, A is to the northwest of B, F is to the
northeast of B, D is to the southeast of F, such that F is to the northwest of E and D is to the southeast of E. If C is southwest of E, then what is the position of A respect to E? So let's suppose here is B is the west of E, here is E, and B is to the west of E. B is to the, this is the west of E and here is B. Now A is to the northwest of B. A is to the north. This is the north and this is the west. This is north and this is west of B. So here is A. A is to the northwest of B. F is to the northeast. This is the north and this is the east of B. So this is northeast. So here F is to the northeast of B. Next is D is to the southeast of F. D is to the southeast. This is the south of F and this is the east of F. So here D is to the southeast. So here is D. F, such that F is to the northwest of E. F is the, this is the north and this is the west. So F is to the northeast of E and D is to the southeast of E. D is the southeast. So here is D. So here is D. Now if C is southwest of E, C is southwest. This is the south and this is the E. So here is C. So here is C of E. Then what is the position of A? What is the position of A with respect to E? This is the north of E and this is the west of E, and A is in northwest of E. A is in northwest of E. So here northwest, it means option C is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 55. All 41 people are standing in a row facing north. Juno is 23rd from the right end while Cherry is 31st from the left end. How many people are there between Juno and Cherry? Total is equals to 41. There are 41 people. Now Juno is 23rd. Position of Juno from the right. Position of Juno from the right is 23rd. And position of Cherry from the left is 31st. Now how many people are there between Juno and Cherry? So find the number of mid person between Cherry and Juno. So there is two cases for finding the number of mid person. If total is greater than 2 left position of first person plus right position of second person, then number of mid person is equals to total minus left position of first person plus right position of second person. If total is greater than 2 left plus right. Second case is if total is less than 2 left position of first person plus right position of second person, then number of mid people is equals to left position of first person plus right position of second person minus total minus 2. So according to given question, total is equals to 41. Total is equals to 41 and left position of the person is equals to 31 plus right position of the second person is 23. 23 plus 31, it means 54. So left plus right is greater than 2 total. So here number of mid person is equals to left position plus right position minus total minus 2. So left position of Cherry is equals to 31 plus right position of Jerry is 23 minus total, it means 41 minus 2. 31 plus 23, it means 54 minus 41 minus 2, it means 43. So 54 minus 43, it means 11.
So 11 persons are there between Juno and Cherry. So here option A is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 56. In a row of 28 students, Jamuna was 12th from the extreme left end and Ganga was 19 from the extreme right end. If Saraswati was seated exactly between them, then what was Saraswati's position from the left end? So total number of students is equals to 28. Position of Jamuna from the left is equals to 12 and position of Ganga from the right is equals to 19. In this question, total left position of first person and right position of second person is greater than 2 total. It means there are overlapping case. It means here Jamuna is 12th from the left and Ganga is 19th from the right, and Saraswati is exactly between Ganga and Jamuna. So here is Saraswati. So find the position of Saraswati from the left end. So Saraswati is exactly between Ganga and Jamuna, and Saraswati is placed just before Jamuna. So Jamuna's position from the left is 12th. So Saraswati's position from the left, Saraswati is placed just before Jamuna. So Saraswati's position from the left is equals to 12 minus 1, it means 11th. So here 11th, it means option A is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 57. If plus stand for division, multiply stand for addition, multiply stand for addition, and minus stand for multiplication, and divide stand for subtraction. So now which of the following is correct? So options are taking one by one and then check which one will follow correctly. So according to option A, 15 plus it means divided by 5, multiply it means plus 2, minus it means multiply by 6, plus it means divided by 3 is equals to 28. So using board mass, so first divide the numbers. So 15 divided by 5, it means 3, plus 2 into 6 divided by 3, it means 2 is equals to 28. So now multiply the numbers. 3 plus 2 into 2, 4 is equals to 28. 3 plus 4, it means 7 never equals to 28. So it means option A is a incorrect option. Now taking option B, according to option B, 15 multiply by means plus 5, plus means divided by 2, minus means multiply by 6, divide it means minus 3 is equals to 56.5. Now first divide the numbers. So 15 plus 5 into 5 divided by 2, it means 2.5 into 6 minus 3 is equals to 56.5. Now multiply the numbers. 15 plus 6 multiply by 2.5, it means 15 minus 3 is equals to 56.5. 15 plus 15, it means 30 minus 3, it means 27 never equals to 56.5. So here option B also a incorrect option. Now taking option C, according to option C, 15 plus means divide 5, minus means multiply by 2, plus means divide 6, multiply it means plus 3 is equals to 4. So here first divide the numbers. So 15 divided by 5, it means 3, multiply by 2 divided by 6, 2 divided by 6, it means 1 divided by 3, plus 3 is equals to 4.
Now multiply the numbers. 3 into 1 by 3, it means 1, plus 3 is equals to 4. So 3 plus 1, it means 4 is equals to 4. So here option C is the correct answer of this question. Let's move on to the next question. So now next question is question number 58. In this question, a statement is given followed by some conclusion. Study the following information carefully and answer the question accordingly. So statement is A is greater than X, X less than O is equals to N, N greater than to F, F greater than equals to U, U less than to D is equals to Q, greater than to V, greater than equals to Y. Now conclusion, first conclusion is U is greater than to X, U is greater than to X, U to X. So U is less than equals to F, F less than to N, N is equals to O, O is greater than to X. So U is greater than to X, U is less than to F, F less than to N. So it means U never greater than to X according to given statement. So here conclusion first is not true. Now according to conclusion number second, E is greater than equals to Q, E is greater than equals to Q, E to Q, E to Q. So it means E is greater than to X but less than to O, E is greater than to X but less than to O. It means E is not greater than equals to Q. So conclusion second also definitely false. So here neither conclusion first or not second follows. So option C is the correct answer of this question, because both conclusion are never follows according to given statements. So here option C is the correct answer. Let's move on to the next question. So now next question is question number 59. A question is given below followed by two statements number 1 and 2, each containing some information. Decide which of the statement are sufficient to answer the question. So now question is Raman's salary is 60% that of Sachit's salaries. What is salary of Raman? So according to question, Raman's salary is equals to 60% of Sachit's salaries. Now find the Raman's salaries. So now we have two statements for this question. So first taking both statements separately. So now according to statement first, Sachit's salaries is 78,000. So Sachit's salaries is equals to 78,000. Now find the 60% of Sachit's salaries. So 60% of Sachit's salaries is equals to 60 divided by 100 into 78,000. So now 78 multiplied by 6, 48, 46,800. So this is the Raman salaries. So Raman salaries equals to 46,800. So option statement first is alone sufficient to answer the question. So here option A, the statement first alone is sufficient to answer the question, is the correct answer of this question, because statement first is alone sufficient to answer the given question. Let's move on to the next question. So now next question is 6 friends L, M, N, O, P and Q works in 3 different cities, namely Chennai, Pune and Nasik, not more than 2 in a single city. So there are 3 cities, Chennai,
Pune and Nasik. And there are 6 friends also. L, M, N, O, P and Q. Now according to question, according to given information, different profession, each of them has different profession: banker, software engineer, lawyer, lecturer, doctor, psychologist, but not necessarily in the same order. O works in Chennai. O works in Chennai. O is not a lecturer. O is not a lecturer. Next is M is a banker by profession. M is a banker by profession. M is a banker by profession and works in Pune. And works in Pune. M is works in Pune with Q. Q already works in Pune. Who is a software engineer? Q is a software engineer. Q is a software engineer by profession and works in Nasik. N works in Nasik and N is not a lawyer. N is not a lawyer. N is not a lawyer by profession. P is a doctor. P is a doctor and does not work in Chennai. But P does not work in Chennai. The other person who works in Chennai is a lecturer by profession. So Q works in Pune. O works in Chennai. N works in Nasik. M works in Pune. P does not work in Chennai, so it means L works in Chennai. And the only other person who works in Chennai is a lecturer, so it means O is not a lecturer, so it means L is a lecturer. Now other, L is a lecturer, M is a banker, P is a doctor, Q is a software engineer. O is not a lecturer, so it means O is a lawyer. N is not a lawyer, so it means N is a psychologist. So now question is, who among the following is a lawyer by profession? Among the group of friends, who is a lawyer? O is a lawyer by profession. So here option A is the correct answer of this question. So we have completed the paper solution. We hope you have understood it very well. If you have any query or doubt regarding the paper solution, please log in the Matrix Olympiad website and click ask the doubt option and write your doubt there. And all kind of new information will be shared on this YouTube channel. So subscribe this channel for more updates, and you can also get the new updates on our WhatsApp channel. So join the Matrix WhatsApp channel for new updates regarding the Olympiad and other information. To join, click on the links provided in the description box. Thank you so much for being here. Have a great time.